Welcome, guys. Welcome to another session with Mr. Pankaj Pandey, the market wrap session. पंकज सर, पहली बात तो आपको कुछ भी आपके बोलने से पहले अल से बहुत बहुत मुबारक. ईयर एंड टारगेट कैलेंडर ईयर 2023 21,400 of Nifty has been achieved, done and dusted. Especially when Nifty was near 16,800 in March 2023, nobody gave this target of Nifty, but ICICI was the only brokerage house sticking to its targets. In a tremendous journey this year. I think we were quite contradictory to what market was anticipating at the beginning of this year. And largely, I think last 3 months, or specifically this month, has been seen a dramatic turnaround in fortunes of the market, and everything is sort of aligning for this market or this bull market to sort of surge ahead. And so we are still working on the next year in targets, but I think our sense is that with this kind of a nearly 2% kind of a gain even this week, and like we all know that Fed has done a sort of U-turn, so they have hinted for rate cuts in calendar year 2024. And we have seen even laggards like IT. So IT was one of the underperforming sectors, whether you look at 1 month, 6 months, or on a yearly perspective. I think IT has seen a dramatic turnaround, and obviously PSUs continue to sort of do well, especially the banks. So I think most of your bigger sectors have started firing. So our sense is that markets, this bull rally is here to stay. In the interim, next a few months, our sense is that the Nifty target would be about 22,400, so about 1,000 points higher from current levels. So obviously, markets will not go in a single straight line, so you would get periods of consolidation. But having said that, supports are placed at some 20,700. So I think, we have a very strong tailwind for macros. Even luckily for us, China is experiencing slowdown. So yeah, I think thanks to China, the crude oil prices are lower. And with whatever challenges China is facing, so China plus one strategy is also working for some sectors. Absolutely. So on top of it, you have US Fed sort of doing a reversal. So I think everything is working for us. And I'm keeping my finger crossed for far more higher levels next year. Absolutely. आप खुशी छुप नहीं रही है आपके चेहरे से, मतलब सीधा दिख रहा है आप. And especially if you see, it's not like it's like every sector is performing. Earlier, initially we had banking. Today, who had seen Infosys moving 6% up in a day? Matlab, when was the last time we saw that? At least 2 years of underperformance is going away, and IT is leading it. So it's good news for everybody. So 22,400 moving on, and 20,700 is the support. So I think this is the range broadly, and the target we'll have. I think next week हमें और picture clear होगा. आज target celebrate कर लेते हैं. That's more important. तो जैसे आपने US Fed के बारे में कहा, so what is your take on the decision that Mr. Powell has given? What do you see in the near term? So I think market is divided between, so there is an expectation that you will see 75 bips kind of a rate cut, but market is sort of expecting about 1.5 or 1.25% kind of a rate cut. So I think our sense is that as and when the US Fed sort of does in the cutting mode, I think the markets will continue to sort of lap it up. And possibly if this coincides in the second half, so then our sense would be that you will see pre-election rally along with the anticipation that Fed is going to cut rates. And post that, probably some kind of a profit taking or consolidation should happen, because I think that is very important for health of the market. So our sense is that we are largely going to see a pre-election rally with a cut of nearly about 100 bips at least in the US next year. Absolutely. And talking about the market, I think initially when we were speaking about the flows, FIS flows were at the lowest, and now we are seeing flows coming back, and domestic flows are also very strong, and SIP numbers are really strong and good going in. So what is your take on the fund flows here, both on the domestic side and the foreign side? So Gaurav, if you look at what has happened in the last, few months, is that we were seeing good domestic flows. So for example, last month also we have seen the SIP inflows of about 17,000 odd crores. I mean, you look at on an annualized number, you would get about 2 lakh crores. That's about $25 billion kind of a domestic liquidity, and which is very massive. And since this liquidity was largely guiding the mid caps and small caps, so mid caps and small caps were literally outperforming the large caps.
And even the last month flows are also sort of reflecting something similar, because while we have net inflows of some 15,500 crores, but the bulk of the flows are still coming in, say, small caps at about 3,700 crores, mid cap about 2,700 odd crores. So mid and small cap continue to sort of receive good amount of inflows. I think where large caps were lagging was because there was a very little participation of the AFIs. But when you sort of look at last 2 weeks, we have seen inflows of 26,000 odd crores. That's massive, and that's a sort of a big turnaround in the overall inflows from a FI perspective. And lastly, because you look at the dollar has started to sort of decline, so the risk appetite globally is sort of increasing. Yeah. And look what we have got in our market. So we have got sectors like IT, which did exceptionally well with 7% plus kind of a gain. Look at a lot of these PSU banks doing absolutely well, the likes of SBI, or say even a stock like NTPC, which typically takes a lot more momentum in the Yes. market to sort of move. I think all these stocks have touched new highs. So from that perspective, I think the missing piece was FPI inflows, and that has come, and which is why nobody's complaining at this point in time, because be it large cap, be it mid cap, or be it small Yeah. cap, everything is performing now. Yeah. So there's one thing that mid of December FIs go on a long chutti because of their holiday days. So do you see this pausing, or आपको लग रहा है कि ये, like, we'll see a pause for 2 weeks or something and then resumption since January, or you see this going ahead, the fund का inflows? So our sense is, even if there is a bit of a pause, though we don't expect a pause to sort of happen. But I think thanks to China, you'll see that our weightages will structurally sort of improve. So a lot of these long-term flows, especially in terms of ETF, will continue to get. And on top of it, our sense is that probably the debt inflows, because of the inclusion in MSCI, I think that should start happening from mid of next year. And we'll get 1% inflows every month. But the good part would be that the yields will start to sort of decline prior to that, and that will be a sort of a big positive for banks. So from that perspective, I think liquidity wise, nothing is stopping us from moving forward. Now, I think your next answer is itching to say about something about PSU banks, because we had our PSU portfolio theme also released where we have in technical side, हमारा one click equity में. So my question comes again, कि what is your take on the PSU, especially the PSU banking sector, and any picks in the PSU banking sector apart from what we have released? So not only technical, we had in some of our recommended portfolios, we had sort of substantially increased and introduced a big bank like say SBI with significant weightages, largely because we were anticipating a rally in PSU banks. And this is happening because if you look at historically, PSU banks have struggled because of higher NPAs. There were losses on the treasury side. The capital was not, so they were sort of less on capital, and then they were experiencing subpar growth. I think all these parameters have sort of changed now. I mean, when you look at the asset quality, the gross NPA ratio has come down from 11% to 5%. You have most of the banks having a PCR of 75%, so they have provided quite well. Most of the banks are talking of say 14-15% kind of a growth. So PSUs were losing market share. I think a lot of these concerns are sort of put to rest, and our sense is that the PSUs which were delivering ROAs of say 0.5, 0.6, and some even below that, I think will inch towards 1% kind of ROA. So they're structurally looking good. So preferred picks here would be State Bank of India, Canara Bank, and Bank of India. Okay. And I think one more thing that you had been highlighting on PSU banks is that mostly everybody is trading below their book value. I think that was also one of the biggest trigger for the PSU banks. So any picks from your end that you can suggest right now in PSU banks? Or So like we you wait? mentioned, yeah. So like you mentioned, Gaurav, the picks would be State Bank of India, Canara Bank, and Bank of India. I think State Bank of India is the only one which is trading shade above price to book. Otherwise, most of them are trading below book. So our sense is that as ROAs inch towards one, there could be some element of premium which they will get. So their price to book values will also sort of improve.
I also want to sort of highlight that while PSUs are looking good, there are other sub segments which are sort of doing very well in the banking and financial services space. I think what we are seeing is that affordable lending space is is a good space which is coming up. One, I think there are a number of factors. So there is an expectation that you will see a higher ticket size because as the economy improves. And Yeah. then the overall underwriting is getting better because of the better data stack. A lot of these players have started to sort of collect. So there are two segments which we like within this. One is the microfinance space, and the other one is SBFC. Other one is MSME finance. So two companies, what we like is one is Spandana Spurti on the microfinance side, and SBFC Finance on the MSME lending side. Prior to that, we had recommended Credit Access Grameen. So I think so Yeah. that is a top-notch company, has already sort of done very well. But our sense is that now it is time for companies like Spandana to sort of do well. And SBFC Finance is again a niche lender to MSME. And it's a fairly large canvas for some of these companies. And both the companies are guiding for 30% plus kind of a AUM growth, so which is quite good. That's massive, and I think that should reflect in the price soon. I think SBFC has been performing really well of late as well. So Spandana, Spurti, and SBFC are the two picks apart from PSU banks that we have. Moving on, Pankaj sir, life insurance, matlab one sector which looks good is the life insurance sector. So what is your take on this sector as a whole? So life insurance sector continues to sort of witness some bit of a volatility because आपके जो कुछ ना कुछ टैक्सेशन साइड में पहले आया था एंड देन नाउ अभी एक IRDA का एक आपका पॉलिसी आया है तो जहाँ पे Yes. उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो सरेंडर वैल्यू होगी है वो ज्यादा होनी चाहिए एंड वैसे देखा जाए तो ये नेगेटिव है फॉर लाइफ इंश्योरर्स बिकॉज अगर आपको ज्यादा सरेंडर वैल्यू देनी पड़ेगी तो वो इनके कहीं ना कहीं बिजनेस में इम्पैक्ट करता है जो हमारा कैलकुलेशन है करीब 4 से 5% का इम्पैक्ट होगा एंड वो प्राइसेस में आपको लार्जली दिख चुका है Okay. बट क्योंकि ये कंसल्टेशन पेपर है तो जरूरी नहीं कि ये आए बट मार्केट्स थोड़े फॉरवर्ड लीनिंग होते हैं तो मार्केट्स उसको पहले ही फैक्टर इन कर लेता है हालांकि ओवरऑल लगता है कि आपको यहाँ से डबल डिजिट ग्रोथ दिखना चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज में देखिए जो कंपनियों का प्रेफरेंस होगा वो HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ जो है उनका जो नॉन लिंक प्रोडक्ट्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो अगर कल को Hmm. ये अगर ये पॉलिसी बन के आती है जहां पे सरेंडर वैल्यू बढ़ा दी जाएगी तो ये दोनों कंपनीज के लिए थोड़ी नेगेटिव होगी आई थिंक SBI लाइफ दैट वे इज फार मोर बैलेंस इनका ग्रोथ भी काफी अच्छा रहा है कंपेयर टू रिलेटिव पियर्स एंड इनका वैल्यूएशन भी बेटर है तो मेरे हिसाब से SBI लाइफ थोड़ा बैलेंस पे है कंपेयर टू से HDFC लाइफ विद इन दिस Okay. Okay. So in life insurance going ahead, SBI Life looks a better play compared to its peers right now. Cool. नेक्स्ट सेक्टर मतलब ये सेक्टर गेस करने की जरूरत नहीं है वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर्स सिंस 2009 अब यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है हमारे पास एक ब्रिगेड हमने एक शुभ निवेश में ब्रिगेड दिया था तो रियल एस्टेट सेक्टर इज द वन वी सीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस आई थिंक महिंद्रा लाइफ स्पेस आपने अपने एंड से भी दिया था कि दैट लुक्स गुड सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सेक्टर एंड आल्सो एनी पिक्स हियर बिकॉज दिस सेक्टर लुक्स रियली अट्रैक्टिव एटलीस्ट DLF एंड ऑल हैव डबल्ड फ्रॉम देयर लेवल 350 to 700 का जर्नी इन a matter of 6 months we have seen. करेक्ट सो आई थिंक एक तो रियल एस्टेट में अप टिल नाउ हम लोग ज्यादातर वॉल्यूम नंबर्स की बात कर रहे थे बट अगर आप वैल्यू साइड में भी देखेंगे जो एंड्रॉप का डेटा है तो काफी अट्रैक्टिव है टॉप 7 सिटीज में आई थिंक जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सेल हुई है करीब 3.5 लाख करोड़ की हुई है जो कि 9 महीने का नंबर आई थिंक ये पूरा नंबर या पूरे पिछले साल में जो बेचा गया था उससे ऑलरेडी ज्यादा है 3.26 तो जो आपने लास्ट ईयर किया था वो आपने इस 9 महीने में अचीव कर लिया Right. एंड वॉल्यूम में अभी एक्सपेक्टेशन है कि आपका पूरे साल का जो नंबर होगा पिछले साल के नंबर से ज्यादा होगा एंड ऐसा वैल्यू में ज्यादा ग्रोथ इसलिए दिख रहा है बिकॉज आपके जितनी भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं वो काफी प्राइस अप्रिसिएशन देखा गया है 8 से 18% का आई थिंक रियल एस्टेट में जो अभी सेगमेंट चला नहीं है वो मेरे हिसाब से मीडियम या लोअर एंड सेगमेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेगमेंट है Right. एंड उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं चले हैं बट ओवरऑल हमें सेंस लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड आइडियली शुड डू वेल फ्रॉम हियर ऑन बिकॉज एक तो ये कि आप इंटरेस्ट रेट कट साइकिल में जाने वाले हैं प्लस आपका जो रियल एस्टेट के सेल्स हैं वो काफी टीयर 1 या आपके जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज के सेल्स तो अच्छे हैं
एंड क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, तो आई थिंक जो रियल एस्टेट में जो मिड और लोअर एंड ऑफ द सेगमेंट ऑफ मार्केट है, आई थिंक वो भी अच्छा करना लगेगा, तो पूरा वैल्यू चेन ठीक हो जाएगा। जो टॉप एंड से जर्नी चालू हुई थी, आई थिंक वो काफी अच्छी करने लगी। देखिए ब्रिगेड आपका लग्जरी सेगमेंट को लार्जली कैटर करता है, तो इट इज ऑलरेडी डूइंग वेल। महिंद्रा लाइफ कहीं ना कहीं मिड सेगमेंट में करता है, तो एब्सोल्युटली। जिसकी वजह से हम पॉजिटिव हैं। एंड आई थिंक इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखी जा सकती हैं, चाहे वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर जेआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो। ये सारी कंपनीज हमें लगता है कि ओवरऑल आगे जाके अच्छा करेंगे, बिकॉज आपका जो रियल एस्टेट है काफी ब्रॉडन हो रहा है मार्केट। एंड माइंड यू, रियल एस्टेट जो है आपकी लंबी साइकिल को फॉलो करता है, तो 4-5 साल तक की साइकिल रहनी चाहिए। हम ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं कि आप अगर बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में भी देखें, तो आपके पास में यस। कटारिया है, आपके पास में सेंचुरी प्लाई है। तो आई थिंक ये जो सेगमेंट का जो ओवरऑल स्प्रेड है वो काफी बढ़ता जा हम्म। रहा है। एंड आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट भी है फॉर फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। एब्सोल्युटली, एंड सेंचुरी प्लाईवुड हमने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया है, एंड जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट इट। 25-26% गेन ऑलरेडी डन। सर, इसमें हाउसिंग फाइनेंस आपने बोला, तो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेकिंग वन ग्रुप्स नेम, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। डू यू सी दिस आल्सो बीइंग अ लीडर हियर, कि इसको फिलहाल वी डोंट नॉट हैव एनी कवरेज ऑन दिस? So we don't have a coverage on this, so I will not be able to comment. But I think typically our sense is that आपके housing finance companies in general अच्छा करना चाहिए। ओके। बस एक मेरे को शिकायत है आपसे कि ब्रिगेड का आपने टारगेट कम कर, ब्रिगेड टारगेट हो गया, उसको भी अचीव कर दिया हमने, और टारगेट बढ़ा देते तो अच्छा होता और हमारे लिए। So we are in the process of doing that. Absolutely. Next sector, sir, power utilities, power sector. यहाँ पे we are seeing a lot of traction. A stock like Tata Power, which was not moving so fast, has been giving good returns in this month itself. So, what is your take overall on the sector and the stocks that one can look at? सो आई थिंक एक जो कंसर्न था पावर में कि लार्जली आपका जो भी ग्रोथ होगा वो ग्रीन साइड में होगा, बट आई थिंक अभी जो रिसेंट पावर मिनिस्टर का कमेंट आया है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई आपको ओवरऑल यू वुड नीड अबाउट 80 गीगावाट और 80,000 मेगावाट काइंड ऑफ थर्मल पावर कैपेसिटी ऑल्सो along with the overall green energy, because thermal power is very critical for balancing the grid. So from that perspective, if you look at, I think for company like NTPC, which is quite high on thermal, I think is a big positive, and which is why there is no surprise that this stock is making a new high, is already crossed 300 rupees this today. So it is extremely good for most of the power companies, because your power demand is going to grow at some 8% till 2030. तो एक पावर डिमांड है। देन अगर आप दूसरा लेग देखें, तो आप ग्रीन हाइड्रोजन में काफी बड़ा पुश करना चाह रहे हैं, तो जहां पे अगर आप 5 मिलियन टन ऐड करेंगे तो करीब 1.25 लाख मेगावाट का कैपेसिटी एडिशन का चाहिए होगा, या फिर आप 10 करेंगे तो 2.5 लाख मेगावाट का चाहिए होगा। सो ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी पाई है वो सबके लिए बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी आपने देखा है कि पीएफसी आरईसी काफी इसी 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 थीम पे काफी बेहतर कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं अभी पावर कंपनीज की बारी है टू डू और टू सॉर्ट ऑफ डू सम बिट ऑफ अ कैच अप, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी है अगले 5-7 सालों तक और काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। सो दैट वे आई थिंक एनटीपीसी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, बिकॉज ये करीब ओवरऑल इनका जो नियर टर्म में जो टारगेट है करीब 16,000 मेगावाट का है। एसजीवीएन जैसे जो भी एक अनदर सरकारी कंपनी है, वहां पे उनका जो कैपेसिटी का टारगेट है करीब 5,000 मेगावाट का है, और 25,000 मेगावाट वो 2030 तक सेटअप करना चाहते हैं। एक जो नंबर के हिसाब से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब आप रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ज्यादा लगाते हैं, तो एक तो आपका जो एग्जीक्यूशन साइकिल होता है वो कम होता है, अनलाइक थर्मल पावर प्लांट। तो आपका जो आरओई जनरेटिंग फिक्स एसेट है वो जल्दी आ जाते हैं, और उस पर आपको रिटर्न मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक जो एग्जीक्यूशन रिस्क वगैरह होता है, क्योंकि टाइमलाइन शॉर्ट होता है, तो कम होता है। तो आई थिंक एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि आपको कन्वेंशनल प्लस ग्रीन एनर्जी दोनों की जरूरत होगी। तो मेरे हिसाब से जो पहले एक सेगमेंट ऑफ मार्केट प्रेफर किया जाता था, आई थिंक वो सारे अभी पावर स्टॉक्स प्रेफर किए जाएंगे, and which is a very good news for us, because we need power from everything, because we are going to Absolutely. grow at 6-7 or in fact more than that. So I think economic growth के लिए power is absolutely essential. एब्सोल्युटली सर, इसमें एक आइनॉक्स का आज एक आईपीओ, आई थिंक आईपीओ ओपन हुआ है आइनॉक्स साइड पे, एंड दे आर इनटू द ग्रीन ग्रीन एनर्जी साइड। सो डू यू हैव एनी कवरेज ऑन दिस लाइक आइनॉक्स ग्रीन, आइनॉक्स विंड, और? So Inox Green जिसका आईपीओ है, तो हालांकि आईपीओ में हम जनरली कमेंट नहीं करते हैं, बट दैट इज इनटू डिफरेंट स्पेस। सो बेसिकली दे मेक क्रायोजेनिक सिलेंडर्स एंड ऑल दैट बिगर वंस।
So not an immediate power related, but different from what it is currently. Okay. But Inox is one of the major players in the renewable side, and also Suzlon. And I should not be, but Suzlon, we had a coverage from our institutional side, which has again seen a massive run there. So these were the questions from my end for this week. बट जाते जाते हमारा एक मार्केट का एक हम करते ही है हिडन जेम वाला सेक्शन. सो इस बार का हिडन जेम कौन से सेक्टर से ला रहे हो, एंड न्यू ईयर से तो थोड़ा वो हिसाब से लाओगे तो अच्छा लगेगा. Absolutely. So I'm in a party mode. So which is why I'm recommending United Spirits with a target price of 1250. Now, premiumization का trend है, so I think this company is riding that premiumization wave. And clearly, if you look at this company has got one of the most iconic brands like Johnny Walker, Black Dog, Black and White, and number of volumes. Now, इसमें अच्छी चीज ये है कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है डबल डिजिट ग्रोथ एंड हाई टीन मार्जिन्स का ग्रोथ का बात कर रहा है. काफी सालों के बाद में कंपनी डिविडेंड भी पे करेगी. अच्छी चीज ये हो रही है कि जो इनका FY23 में आप ओवरऑल देखेंगे तो लग्जरी एंड प्रीमियम कैटेगरी करीब 37% का ग्रोथ वहां पे देखा गया है, विच इज मैसिव. एंड इवन लोअर एंड मिड प्रेस्टीज में भी करीब 40% प्लस का ग्रोथ है. तो एक तो ये कि ऑलरेडी ये प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड देखा जा रहा है. एंड इंडिया में आप जो भी बोल लीजिए स्पिरिट्स मार्केट काफी बड़ा है, तो करीब 92% स्पिरिट्स मार्केट है, बाकी बियर है. सो ये कंपनी बड़े सेगमेंट में बड़ा प्लेयर है. एंड एक चीज और जो हो रही थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह एक्साइज बढ़ा रही थी, तो दैट वाज इम्पैक्टिंग. बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन गवर्नमेंट्स हैव आल्सो रियलाइज्ड कि दे शुड नॉट एग्रेसिवली गो इन फॉर हाइकिंग, and which is why they are looking at volume growth along with some bit of a pricing growth. And company को थोड़ी बहुत pricing बढ़ाने दी गई है, तो इनके थोड़े margins वगैरह improve हुए हैं. एंड ऑल अलोंग हमें लगता है कि ओवरऑल इसका जो बॉटम लाइन है या जो EBITDA है वहाँ पे ग्रोथ डबल डिजिट में अच्छी खासी रहने वाली है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये कंपनी IPL भी टीम भी ओन करती है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका वैल्यूएशन इसमें अभी भी कैप्चर होता नहीं है. So some part of it, if you look at overall, quite attractive because this company is trading at some 5.5 times of their revenues. Typically, brand-oriented company generally ज़्यादा trade करती है, तो मुझे लगता है कि इसमें potential upside अच्छी खासी है. Absolutely. अब people who don't know what is United Spirits, तो McDowell's इसका पुराना नाम है, तो आप McDowell's के नाम से भी देख सकते हैं. So पंकज सर, आपने टारगेट नहीं बोला, तो what is the target you're expecting in the year? So target here is 1250. परफेक्ट. तो न्यू ईयर का पार्टी एंड सब अपने ब्रांड से बोल दिए, लोगों को अपने हिसाब से ब्रांड चूज कर लिए रहेंगे. सो पार्टी हार्ड बाय मैकडॉवेल्स एंड व्हाट यू कॉल गेट गुड रिटर्न्स एज वेल, आई वुड से दैट. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन द चैट, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस ले लेता हूँ. सो फर्स्ट इज hello, sir. Option, sorry, viewers, we won't be taking options questions, so please, sorry. Thank you, Pankaj ji. You are the only one who was positive with certain targets, so there's a congratulation from one of our viewer, KG sir. Next is Reliance Industries and TCS. What do you think at this level? So I think IT is one sector which has not done so well. I think TCS also has not had a very great year in terms of revenue growth and everything. So now some bit of a catch up they have already done, but I'm still not very sure because domestic story is very strong than when you look at say US story, because see most of your IT companies derive say 50 to 70% of their revenues from US market. So we are still not very sure कि US market का growth कैसे pan out होगा. But domestically, we all know that things are largely in place for us to sort of deliver good growth. So that way अगर between the two दो होगा तो मैं Reliance को ज़्यादा prefer करना चाहूँगा. And क्योंकि Reliance एक बड़ा I think अगर उनका जो green hydrogen का जो aspiration है of producing green hydrogen at $1, I think वो pan out होता है तो ये कंपनी काफी बड़े स्केल पे ये I think चमत्कार कर सकती है. That is what I would sort of say. Because green hydrogen is considered to be the fuel of the future. अगर आप इसको सबसे lowest cost में बना पाए तो I think आप सबसे profitable player रहेंगे globally. So I think which is what Reliance is aiming for. इसीलिए चाहे वो polysilicon हो या cell हो या फिर modules हो, हर चीज वो in-house बना रहे हैं. So that way I think I am very positive structurally on Reliance. TCS I think थोड़ा catch up करेगा because काफी time का underperformance है.
आई थिंक उसके बाद में बहुत क्लियर नहीं है, बिकॉज यूएस में भी ग्रोथ रेट के जो आउटलुक है कोई बहुत क्लियर नहीं है। थोड़े कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट इस साल से कमी होगी, काफी सारे वोलेटिलिटी होने वाली है, बिकॉज आप हाई इन्फ्लेशन में जाते हो तो आपको इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं, काफी सारे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होते हैं। तो एक ट्रांजिशन में कहीं ना कहीं ग्रोथ इम्पैक्ट होती है, बट डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनी ज्यादा बेटर लगती है। Okay. Sir, next question is SBI card. Do you think SBI card will perform like SBI? That is the question, but I think आप SBI card पे view दे दो, that would be better. Yeah, so see, SBI card, so this year has been very sort of a year where the stock has sort of significantly underperformed, and largely because of number of reasons. But our sense is that, see, one benefit these card companies get is that when the interest rates come down, typically it helps them to make better margins. Because what happens is that you will charge people the higher rates, but your cost of borrowing is higher when the interest rates are higher. So that has been the year, that has been the case last 1.5 years. But if आगे जाके interest rate cut होगा, तो I would want to believe that SBI card, you never know, when we do this segment next year, might be the top performing stock. Exactly. There is a suggestion for you, sir. So, can you change and upgrade your new targets in the research recommendation posted earlier? I will. I mean, that's one of the primary things which we are working on. Perfect. That's great. Then last one question. Someone has asked, okay, thanks, Pankaj ji. Your analysis is very good. Congratulations to you and your team. Keep guiding without market bias. It's great. Thank you, sir. Ambuja Cements, I'm holding since Jan 2023, bought at 570. What should he do? He's asking that. So I think within Adani Group, ACC, Ambuja, and Adani Port, I think these three companies we like. So Ambuja, I think is trading at somewhere to $40 EV per ton. But I think good part is that company is looking to double the capacity to about 140 million tons. Quite aggressive on M&A side. प्लस आई थिंक ओवरऑल जो चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो सस्टेनेबल बेसिस में कैन दे मेक 1,000 रुपीज एबिटा पर टन। एंड जो मैक्रो टेलविंड है वो काफी स्ट्रांग है मेरे को लगता है, क्योंकि आपके जो ओवरऑल केपेक्स साइकिल है वो काफी अच्छी है। आई थिंक बजट हालांकि अभी वोट ऑन अकाउंट आएगा तो आपको ज्यादा उससे कुछ मिलेगा नहीं, बट मई जून तक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि आपका पॉलिटिकल सेटअप चेंज नहीं होगा तो आपका अच्छा खासा केपेक्स होगा। So I think cement as a sector ने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, but our sense is that going forward this is one of the sector, जैसे कि ये relatively ज़्यादा चला नहीं है, I think should do well, and Ambuja and ACC ideally going forward should be top performing. कहाँ चला नहीं सर, लास्ट ईयर का अल्ट्राटेक 6700 का 10,000 हो गए एक I am talking about Ambuja. You have one more question from a viewer on Adani. Sir, which Adani company would you recommend for buying? Adani Total Gas, Adani Green, or Adani Enterprises? That's a tough one. Adani Ports, I would say, because I track only 3 companies. I'm trying to be Gautam Gambhir. So yeah, that's it. Yeah, so these are the questions, and this is a wrap from our market wrap section. Thank you so much, Pankaj sir, for removing time as usual. Hope to see 22,400 as soon as possible, like reaching our own targets and setting a new milestone for us. Thank you so much for joining. Thank you so much, viewers, for being a part of this. Pleasure. Thank you. Thank you, sir. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.